Articles हमने पढ़ा a, an and are articles. Today we are going to do noun and verb agreement, or you can say subject verb agreement. उसके लिए आपको समझना ज़रूरी है कि what are nouns, what are the different types of nouns and different types of verbs. nouns की बहुत सारी टाइप्स होती हैं. इनको समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि आगे जहाँ भी करेक्शन ऑफ एरर में ये नाम आ रहा है तो ये इस नाम के क्या एग्जांपल्स हैं, इस नाम से क्या मतलब है. प्रॉपर नाउन्स आर प्रॉपर नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग जिनको आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल अली, ए इज़ कैपिटल, लाहौर एल इज़ कैपिटल, एंड नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, अमेरिका ए कैपिटल आएगा, पैसिफिक ओशन पी कैपिटल. जितने प्रॉपर नेम्स हैं उर्दू में इसको आई थिंक इसमें मार्फा कहेंगे. रिकॉल कराएं, ज़ाहिर है आपने ये चीज़ें जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं. एंड देन कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, कॉमन थिंग जो ख़ास नहीं है. एंड फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, सिटी, it can be anything. It can be a book, table, chair, something which is not which is not very special. It can be cat, dog, horse. But if you give that cat a particular name, you call it whitey or snowy, तो वो letter capital बन जाता है because that becomes a proper noun. And then abstract nouns, these are abstract ideas. You can say they are some qualities which you can just sense. You cannot touch them. आप उनको you cannot touch, taste or smell them with your, you cannot feel them with your five senses, but they are abstract qualities, abstract ideas or abstract things. For example, wisdom, danishmandi, which is said, akalmandi. So this is something which is an abstract noun. You cannot touch it, you can just feel it, okay. And then there is freedom, there is greed, there is honesty. These are all abstract nouns which give some characteristic of the noun, or you can say they are noun itself. वो खुद noun है. These are not characteristics of noun, ये खुद ही noun है, abstract nouns. Concrete nouns are nouns which you can touch, which you can feel, which you can sense with your all five senses. These are the opposite of abstract nouns. Abstract nouns को आप touch नहीं कर सकते. कॉन्क्रीट नाउन्स को आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. एप्पल, डॉग, हाउस, आइसक्रीम, फ्लावर, दीज आर कॉन्क्रीट नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स, यू कैन काउंट देम. पेन, पेन्स, बुक, बुक्स, rubber, rubbers. Uncountable nouns are which you cannot count. They might be in the form of liquids, or they might be plenty in number. For example, milk, water, snow. Snow is not as a liquid, in a liquid form, but you cannot count it. It is an uncountable noun. Rice, stars, oil, gas. These are all uncountable nouns. Compound nouns, cow, boy, textbook, sofa cum bed, mother-in-law. These are combination of two or more nouns, usually two nouns. टेक्स्ट एक अलग नाउन है, बुक एक अलग नाउन है, लेकिन दोनों की कम्बिनेशन से एक कंपाउंड नाउन बना है. काउ एक अलग नाउन होता है, बॉय एक अलग नाउन है, लेकिन दोनों के कम्बिनेशन से एक बिल्कुल नया नाउन बन जाता है. सो दीज आर कंपाउंड नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स आर, यू कैन से अ बंच ऑफ ग्रेप्स. बहुत सारे ग्रेप्स हैं, उनको बंच कहते हैं. गैंग ऑफ थीव्स, बहुत सारे थीव्स हैं, उनके ग्रुप को गैंग कहा जाता है. एंड इसके अलावा और भी होते हैं, हर्ड, कैटल. दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन. और भी इसकी स्वार्म ऑफ बीज, स्वार्म इज़ अ कलेक्टिव नाउन. सिंगुलर नाउन, कैट, शिप, पेन, book. These are
सिंगुलर नाउन्स, क्योंकि एक चीज़ को ये डिनोट कर रहे हैं. वन इन क्वांटिटी. Plural noun, they denote things which are more than one. Cats, ships, pens, एक से ज़्यादा हैं तो these are plural. Material noun is gold, coal, oil. Material noun की आपको concrete noun से थोड़ा सा different है, इसीलिए लग एक जैसे रहें कि different क्या हुआ, क्योंकि concrete noun भी तो हो सकता है gold, coal, oil, लेकिन थोड़ा सा different है, इसीलिए मैंने material noun की detailed definition दी है आपको. Material noun is a substance, a material or an ingredient we can see and touch which is used for making things. कि ये एक ऐसा मटेरियल है, ये इंग्रेडिएंट है जिसको आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको उससे दूसरी चीज़ें बना सकते हैं. इस तरह से जैसे कोल, ऑयल, गैस, वुड, ग्लास, इनसे चीज़ें बनती हैं. दीज आर ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन्स. इस तरह से फ्लोर हो गया, बेकिंग पाउडर, दीज आर ऑल्सो मटीरियल नाउन्स, क्योंकि दीज आर इंग्रेडिएंट्स, आप इनसे दूसरी चीज़ें बना सकते हैं.